तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर इन द पोर्टल सिस्टम यूजली follows obstruction to the portal blood flow anywhere along its course. Portal veins have no valve and thus obstruction anywhere in the portal system rises pressure in all the veins proximally to the obstruction. However, unless proved otherwise, portal hypertension means obstruction of the portal blood flow by cirrhosis of liver. Okay. The normal portal venous pressure is quite low, 10 to 15 mm saline. Portal hypertension occurs when the portal pressure is above 30 mm saline. Measurement of intrasplenic pressure reflects pressure in the splenic vein. The percutaneous transhepatic pressure provides a measure of pressure in the main portal vein, and the wedges hepatic venous pressure represent the sinusoid pressure. Measurement of the pressure helping in localizing the site of the obstruction and classify portical hypertension. Classification. Based on site of obstruction. First, intrahepatic, intrahepatic portal hypertension. Cirrhosis is by far the commonest cause of portal hypertension. About 30 to 60% of patient with cirrhosis develops significant portal hypertension. दूसरा होता है इसका पोस्ट हिपेटिक. पोर्टल हाइपरटेंशन. इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टू द blood flow through hepatic into inferior vena cava. तो सेकंड ये हो गया. तीसरा क्या है, प्रीहिपेटिक.
इसमें पोस्ट हेपेटिक में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द हेपेटिक वेन इनटू इंफीरियर वेना कवा। जो ब्लड जाता है इससे हेपेटिक वेन से, वो पोज नहीं पाता तुम्हारा इंफीरियर वेना कवा, क्योंकि उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। तो लास्ट हमारा प्री हेपेटिक, तो इसमें होता है ब्लॉकेज ऑफ पोर्टल फ्लो बिफोर पोर्टल ब्लड reaches the hepatic sinusoids, results in pre-hepatic portal hypertension। ओके, कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं इनकी। कॉम्प्लिकेशंस of portal hypertension, respect to the mechanism involved with the pathogenesis of the portal hypertension, there are four major clinical consequences। तो इसके 4 रीजन्स आते हैं इसके अंदर। पहला है एसाइटिस, ये क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ excessive volume of fluid within the peritoneum cavity। associated with dilution, edema and decreased urinary output। पैथोजेनेसिस, जब 500 ml से ज़्यादा फ्लूइड अगर डिपॉजिट हो जाए पेरिटोनियम कैविटी में, तो उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। ओके, तो इसमें पहला ए फैक्टर है सिस्टमिक फैक्टर। सिस्टमिक फैक्टर में क्या है, इसका पहला पार्ट है
decreased plasma colloid oncotic pressure. There is a hypoalbuminemia from impaired hepatic synthesis of plasma protein, include albumin, as well as from loss of the albumin from the plasma blood into the peritoneum cavity. Hypoalbuminemia in turn causes reduced plasma oncotic pressure. तो इसका कारण क्या होता है? हाइपोएल्ब्यू इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, हाइपो कम हो जाएगा, प्रोटीन का अमाउंट कम होगी तो ऑनकोटिक प्रेशर जो तो होता है तुम्हारा वो भी कम हो जाता है. ठीक है. सेकंड इसका रीजन है हाइपर एल्डोस्टेरोन. In cirrhosis, there is an increased aldosterone secretion by the adrenal gland, probably due to the reduced renal blood flow, as impaired hepatic metabolism, excretion of the aldosterone. Okay. ठीक है. एल्डोस्टेरोन का अमाउंट कम होएगा नहीं बढ़ेगा. In cirrhosis, there is an increased aldosterone secretion by the adrenal gland, probably reduce the renal blood flow. Okay. एड्रेनल ग्लैंड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा. इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन secretion by the एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा. एल्डोस्टेरोन ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है ना, तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा. ओके. इसका थर्ड कॉज क्या होगा, impaired renal excretion. रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया था, उसकी वजह से impaired renal excretion भी कम हो जाएगा. तो तुम्हारा दूसरा बी पार्ट क्या है, लोकल फैक्टर्स. हम एसाइटिस के कॉजेस पढ़ रहे हैं अभी कि किस किस कारणों से होता है. लोकल फैक्टर्स में पहला है इंक्रीज्ड पोर्टल pressure. Portal venous pressure is not directly related to the ascites formation, but portal hypertension in combination with the other factors contribute to the formation and localization of the fluid filled retention in the peritoneum cavity. Okay. Second cause is का increased hepatic lymph formation. Obstruction of the hepatic veins such as a Budd-Chiari syndrome and increased intrasinusoidal pressure found in a cirrhosis patient stimulates hepatic lymph formation diffuse through the surface of the liver. चलो ठीक है. सेकंड क्या है, वेरिसेस.
इसमें क्या होता है? As a result of the rise in the portal venous pressure and obstruction in the portal circulation within or outside the liver, the blood tends to be bypass the liver and turn to the back to the heart by development of portosystemic collateral channels. These varices develop at sites where the systemic or portal circulation have been capillary beds. ओके, इसमें क्या होता है? Blood tends to bypass the liver and return to the heart by development of portosystemic collateral channels. Bypass the liver and turn the heart by development of portical systemic system. ठीक है. Principal sites. Esophageal varices. The development of esophagogastric varices is frequently manifested by the massive hematosis is the most important cause of the portal hypertension. ठीक है. दूसरा इसका कारण है hemorrhoids. Development of collateral between the superior, middle and inferior hemorrhoidal veins resulting in hemorrhagic is another common. Bleeding from the hemorrhoids is usually not serious complication as hematosis from esophageal varices. Okay. Captomedusa. Anastomosis between the portal and the systemic veins may develop between the ileum of the liver and the umbilicus, along with the para-umbilicus plexus of the venous, resulting in the abdominal wall collateral. These appear as dilated subcutaneous vein radiating from the umbilicus to the trombogonus. क्या है? थर्ड क्या था? Splenomegaly. The enlargement of the spleen is prolonged portal hypertension and is called conjunctive splenomegaly. The spleen weighs 1000 grams and easily palpable. The spleen is larger in the young people and the macronodular cirrhosis than in micronodular cirrhosis. Okay. Hepatic portosystemic venous tuning may result in the complex metabolic and organic syndrome of the brain characterized by the disturbed consciousness, neurological signing and flapping tremors. Hepatic encephalopathy is particularly associated with the advanced hepatocellular disease such as cirrhosis. The ultimate cause of death in cirrhosis are hepatic coma, massive gastrointestinal hemorrhage from the esophageal varices, intercurrent infection, hepatorenal syndrome and development of the hepatocellular carcinoma.
Okay, we are done with this video.